चले algebraic expressions. Okay, algebraic expression is the most easiest of all subjects, and the only thing, the skill that you need to do algebraic expression is lot of meditation and lot of concentration. And don't be a miser. If somewhere you are actually doing a problem and you are at this part of the page, leave the page, start from a new page, because every time you keep on turning the page, one minus will be written as plus, and after that problem is gone and you will be hunting needle in grass. ठीक है, your attention should be spot on. और इस चैप्टर के दौरान तुम दोनों एक साथ बैठो ही मत, हाँ एकदम दोनों का गलत होगा. ठीक है, चलते हैं, आ जाओ. नया चैप्टर, नया मूड, algebraic expressions. क्लास 6 से शायद आप लोग शुरू कर दिए हो algebraic expression. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे algebraic expression में कुछ ये सब चीजें होती है. एक वेरिएबल होता है हमारे पास, ठीक है. नंबर 2, वेरिएबल के साथ एक कोएफिशिएंट होगा. नंबर 3, एक पावर होगा. इन तीनों के साथ एक algebraic expression बनाने की कोशिश करते हैं. ओके, वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड, द मोस्ट कॉमन वे आर x, y and z. You can also have m, n, r, s, whatever you want, as long as you specify it. Okay, so let's see, let's make one simple algebraic expression. Say suppose I have an algebraic expression which is 6x square. Okay, in 6x square, the way we read it, the way you are supposed to read it, you are supposed to also see the hidden plus out here. And then we say that my variable is this particular item x, the power is 2, understood, and the coefficient we will say, we don't directly say what is coefficient, you need to ask what is the coefficient of x square. Then I say the coefficient of x square is plus 6. Have you understood? Plus 6. If the same thing would have been negative 6x square, I would have told the coefficient of x square is negative 6. Are we a little bit fine with these three terms? Yes, sir. Okay. Now this is one algebraic expression. If two algebraic expressions are linked together, let's say we have an algebraic expression 6x square and I link it with another expression 2y cube. 6x square and I am linking it with one more called 2y cube. I have linked it. ऐसे linking करने से this fellow is known as the operator. The operator can be a plus or can be a minus. Have you understood? This sort of an algebraic expression, this type, which do not have any linking, they are single term. They are a single term. So these sort of algebraic expressions will be called as a monomial. Monomial does not mean something small. 96, 44, 38, 69, 28, 360y. This is also monomial. जब तक ऑपरेटर नहीं रहता है, ऑपरेटर आ गया, मोनोमियल गया. And if somebody writes x plus y, binomial, because there are two terms in it. Okay, monomial. तो इसके बाद ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा बाइनोमियल. उसी तरह अगर किसी के पास ax plus b plus c है, ट्राइनोमियल, और आगे चल के बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पॉलिनोमियल. सीख लिया? With the terms we name them. How do you name? Nominal means, actually mial means term, mono means 1, bi means 2, tri means 3, quadro means 4 and polynomial means many. तो अब तक आप क्या क्या सीख चुके हो? Sir, I get to know what is a monomial, I get to know what is a binomial, I get to know what is a trinomial and a polynomial, many terms. So let's see. Let's write one monomial. Monomial can be written as 5a. ठीक है? अच्छा, how about 5? Is 5 a monomial? Yes, 5 is a monomial because a यहां भी है, आपको दिख नहीं रहा है. a to the power 0. a to the power 0 means how much? 1. a तो था, आपको दिखा नहीं. ठीक है? लेकिन हम ऐसे लिखते नहीं है. ऐसे टर्म को जहां कोई 5 अलग से आता है ना, ऐसे 5 आ गया या मान लो एक k आ रहा है अलग से, ऐसे टर्म्स को हम कहते हैं कांस्टेंट्स. कांस्टेंट वो है जिसका कोई वेरिएबल नाम का वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं है, वो कांस्टेंट है. अंडरस्टूड? कांस्टेंट कैन आल्सो बी अ प्लस और अ माइनस. लाइक आई कैन हैव -5 and +k. So constant is someone which is
without any variable. Understood? Can also be taken as a monomial also. That's why in higher mathematics we call them as constant polynomials. ठीक है? Clear? अच्छा, चलिए आगे चलते हैं. Variable is something whose value is not fixed. If I write x as a variable, then I should mention x is the variable. Variable can take any values, whereas a constant has a fixed value. I'll give you a very nice example. You went to Ratnadeep. Mangoes are being priced at 100 rupees a kilo, right? So let us write the computer program for purchasing mango. So the computer program for purchasing mango is amount payable will be 100 into x plus 5 rupees carry bag. X is how many kilo mangoes you are buying. Srishti came to the shop and she bought 1 kilo mango. So her bill will be 100 rupees plus 5 rupees carry bag, 105. You came and bought half kg. So your bill will be 50 rupees. X is variable. The shopkeeper every time will enter the kg. Are you getting it? But 5 rupees will always be constant. Carry bag तो 5 रुपया ही है. साहब मैं एक मैंगो लेके गया हूँ, आप हाथ में नहीं लेके जा सकते, कैरी बैग में लेना है, 5 रुपया. समझ में आया? This is the difference between constant and variable. Have you understood? Pressure is equal to P. If the pressure is varying, then P is a variable. Like say the pressure, I am suppose in a petrol bunk, I am filling pressure air in any Tom and Harry is coming, I am filling pressure in their car tire. So the values of pressure are changing, but inside your car the pressure is constant. So for you it's a constant, for me it's a variable. Variable means something whose value is not constant. It will take, see, this is the program of a computer. How can I assign a complete value? I don't know who is going to buy how much. So it's a variable. Depending on the variable, the amount changes. Somebody buys 1 kilo, price is different. Somebody buys 2 kilo, price is different. Chalo. Okay. So this is a monomial. Say 5x is a monomial. Number 2, we say a binomial. A binomial. The binomial would be say 5x plus 2. Okay. Let me third bring a trinomial. A trinomial would be 3x square plus 5x plus 2. Is that a little bit clear to you? Yes, sir. All these three are algebraic expressions. But one interesting thing is, in these three algebraic expressions, the variable is same. X. Don't say that the variable is x and here it is x square. No. Variable is x. Here it is appearing as x square. Here it is appearing as x. So these three algebraic expressions, I will say, they are algebraic expressions in one variable, one var. Have you understood? Instead, if I would have written one algebraic expression as 5x, the other algebraic expression as 5x plus 2y, then these algebraic expressions are algebraic expressions. Typically say this algebraic expression, this one is an algebraic expression in two variables. It's a binomial in two variable. It's a binomial in one variable. Monomial in one variable. If I write 5xyz, monomial in three variables. समझ में आ रहा है अभी? Variable अलग चीज होता है, monomial अलग चीज होता है. Clear? Understood? Very good. चलो, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं किसमें? Let's say I have an algebraic expression 5x and I have another algebraic expression 6x. Are both of them monomials? Yes. Do they have the same variable? Yes. Is the power of the variable same? Yes. Then such expressions are called like terms. इनके बीच में शादी हो सकती है, रिश्तेदार बराबर वालों में. So you can add them, you can subtract them. 5x plus 6x, you will write 11x. And if you do 5x minus 6x, it's negative x. Have you understood? Yes, sir. Like terms. Like terms means two algebraic expressions. I have shown a very simple example with monomial. It can be with binomials also. The only condition is the terms should be exactly alike in terms of their variable and their power. अन्विता clear हो रहा है? जैसे मान लो मेरे पास एक चीज है 5x plus y
और एक और है से 3x माइनस 2y। ठीक है, दोनों को देखते हैं। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? बाइनोमियल इन टू वेरिएबल्स x एंड y। व्हाट इज द पावर ऑफ x एंड y? 1 ईच। ये क्या है? बाइनोमियल इन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x एंड y। व्हाट इज द पावर ऑफ ईच ऑफ द वेरिएबल? 1। आर दे लाइक टर्म्स? यस, यस दे आर लाइक टर्म्स। क्यों लाइक टर्म्स नहीं है? क्यों नहीं है बोलो? क्या क्या डाउट है वो पूछो। हाँ, बहुत जरूरी है आपका क्लियर होना। बोलो क्यों आपको लग रहा है ये? कोई गलती नहीं है। कहां वेरिएबल्स डिफरेंट है? यहां 5x है, क्या आपको x टर्म है? यहां पे है ना 3x। यहां क्या है? प्लस 1y, प्लस 1y। यहां पे क्या है? माइनस 2y। प्लस और माइनस से में कुछ नहीं आता जाता है, y y है ना। लेकिन अगर मैं इसमें y स्क्वायर कर दूं अब, लेकिन ये लाइक टर्म्स नहीं है। हाँ, ये पार्ट ऐड हो जाएगा, ये पे आप इन्हें ऐड नहीं कर सकते, ये ऐड होके ये अलग होके बैठा रहेगा। हाँ, x लाइक टर्म है, इतना पोर्शन ऐड होगा, इतना नहीं होगा। जैसे मान लो कोई आपको कहता है 36 ABC और कोई कहता है 36 CBA, क्या ये लाइक टर्म्स है? बिल्कुल लाइक टर्म्स है, इस अरेंजमेंट में अलग लिखा है। लेकिन अगर कोई कहते हैं कि 36 CBA स्क्वायर, अब लाइक टर्म नहीं है। तो मैं अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। लाइक टर्म्स आपको समझ में आया है कि नहीं? एवरी वन ऑफ यू क्रॉस चेक एंड आस्क योर हार्ट, हैव आई अंडरस्टूड व्हाट इज अ लाइक टर्म? हैव आई अंडरस्टूड? बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस यू विल goof up. To be like terms, your coefficient does not matter. The only thing that matters is how many variables you have, how many variables do I have. Count should match, type should match, and also the bindi or the number of horns on their head in terms of power. Black cow, brown cow, no problem, as long as cow. One horn, two horn, two horn, two horn. No horn, no horn. One horn चलेगा, ठीक है? Because if you understand like terms, the next thing we say is that addition and subtraction are possible only with like terms. Remember, ये भी लिख लो, two algebraic addition expressions can be added or subtracted only if they are like in terms. ठीक है? However, this is एकदम मतलब अरेंज मैरिज, पूरा एकदम खानदान, गोत्र, कुंडली सब मैच होना पड़ेगा तभी होगा। एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो अर्ली मैन और जंगल जैसा हमारे सर बोलते थे, जो जिसको लाइक करता है उसी के साथ शादी हो गया, कोई इशू नहीं। मल्टीप्लिकेशन में एवरीथिंग इज पॉसिबल। अंडरस्टूड? Pakul, you're listening with so much of attention like this. Really you are understanding, or are you? Like terms, if you want to do addition or subtraction, the first thing at the back of your head it should be, are they like terms or not? If they are not like terms, I cannot add them. I cannot add them. Understood? Second thing comes subtraction. Can I subtract one from the other, either way around? Sir, you can. Subtraction is nothing but addition, only with the negative side. You can do that only if the terms are like. ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल देखे। क्या हो गया आर्यश, समझ में आया? तो बहुत कुछ सोच रहा है आर्यश, पिछले जन्म की बातें याद आ रही है। सर ये तो लास्ट जन्म में भी किया था। अब करेंगे, वो तो बोलो बेटा। ओके, और एक है 5ab स्क्वायर है, तो वो लाइक नहीं होगा। बिल्कुल लाइक नहीं होगा सर, तो a और c लाइक नहीं, उसमें a और c मल्टीप्लाई में है ना। See what our friend Abhik is asking, he has one term called 5abc, he has another term say 5abc square. He is asking are they like? Not at all, they are not like. नहीं, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये लाइक नहीं है। लाइक होने के लिए तीनों वेरिएबल और उसका पावर सेम होना चाहिए, जो कि नहीं है अभी। आर वी फाइन? चलिए अब देखते हैं, कुछ एडिशंस देखने की कोशिश करते हैं। विल गो लिटिल बिट फास्ट आउट हियर because these are something you have done in last class also. Let's say somebody tells you 5x square plus 2xy plus 3z is to be added
is to be added, say with this one, and you add 4z plus 2x square minus 3xy. आपको ये दोनों ऐड करने बोलता है, ठीक है? Just add these two. So the way that we have done in our kilo class, the one क्या हो गया? हाँ आ रहा है बाहर से. How is it bothering you? If you walk on the road, there may be a urinal beside. यूरिन का भी स्मेल आएगा. आप अपना काम में ध्यान दो ना. You concentrate on your thing. What is so bothering you? That means that is more interesting to you than this. समझ में आ रहा है? Have you read about Mahabharata? There's everybody says, what do you see? Arjun says, I see only the eye of the bird and nothing else. तुम क्या बोलोगे? Sir, I see N tower, F tower. Sir, two boys dancing. और द्रोणाचार्य चपाट करके एक मारेगा तुमको. ठीक है? तो इन दोनों को ऐड करने के लिए सबसे पहले we will see which is called the feeding bottle method. What method? Feeding bottle method. जो बच्चा लोग पीता है, दूध पीने वाला मेथड. दूध पीने वाला मेथड देखने में अच्छा लगता है, but it will not help you. दूध पीने वाला मेथड में we do tabular. There's a tabular method. We exactly place the terms under the like terms. So 5x square, इसके नीचे हम क्या बिठाएंगे? 2x square. तो इसको लगा लिया. 2xy के नीचे किसको बिठाएंगे? 3xy. और 4z को किसके पास बिठाएंगे? 3z के पास. समझ में आया? सक्सेना सक्सेना मल्होत्रा मल्होत्रा खाना. अब ऐड करो 5x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो गया? 7x स्क्वायर. 7x 4 मत लिख देना. माइनस प्लस माइनस xy and 4 and 3 7z. How many of you understood this addition? Lakshan, have a check. If you have not understood anything, do let me know. There is no shame, nothing. But please speak out. Did you understand this addition, all of you? Yes, sir. Pretty easy. Pretty easy. Very good. But now, since we are getting into grade 8, we will avoid this feeding bottle method. Okay? So how we will do this problem? We are no more allowed to do this problem in this manner. We will do it in straight cut method. Straight means क्या था हमारा यहाँ पे क्या था? भूल गया ना. 2x square क्या था? 4z plus 2x square minus 3xy. So now your eyes should be fed like the sniper. 5x square. आप यहाँ पे ढूंढो x square टर्म है ऐसे लाइन बिठा दो. दोनों को ऐड करो. कितना हुआ? 7x square. उसके बाद 2xy ढूंढो. कोई xy ऐसे डालो सिंबल. xy है 2 और ये माइनस. दैट मीन्स माइनस xy. उसके बाद 3z 4z 7z. अच्छा, लिखने का तरीका कैसा रहता है? दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ राइटिंग एन algebraic expression. An algebraic expression is always written with the increasing power to the decreasing power. Sir, if I write like this, will ma'am give me 0? No, she will not give you 0. But that's not how you write. There's a hygiene also, ना? कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं. क्लियर आया? अच्छा, आइए इसी चीज को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो सब्ट्रैक्शन में कैसे रहेगा? दिस थिंग I will no more show tabular because tabular is feeding bottle. वो नहीं करेंगे. अच्छा, whenever they ask you to subtract two algebraic expression, क्या बच्चा? Subtract. The question will not come like this. The question will come like this. Subtract 4z plus 2x square minus 3xy from 5x square plus 2xy प्लस 3z. ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग क्या सोचना चाहिए? सर मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है. नहीं है तो आपका दिमाग इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेगा किसमें? सिंपल क्वेश्चन में. और आप इसको लिखो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 7. देन व्हाट डू यू डू? 7 माइनस 4 करते हो ना. बस वही करना है. आपका 7 कौन सा है? आपका 7 ये है. सो यू विल राइट 5x स्क्वायर plus 2xy plus 3z minus. Now whenever you do minus, think that these people have just come out after bath from bathroom directly. इनको कपड़े पहनाओ वरना गड़बड़ी हो जाएगा. कोई भी वैसा वो रील बना देगा आपका. और यहाँ पे क्या हो गया? 4z then 2x square minus 3xy. दोनों में ब्रैकेट बिठाओ. ये ब्रैकेट जो नहीं बिठाएगा उसी का गड़बड़ होगा. रिमेंबर लीनियर इक्वेशन में जो ब्रैकेट नहीं बिठाता था, do you remember those linear equation problem? Something like minus x minus 1 by 5. हमेशा ब्रैकेट बिठाओ.
ब्रैकेट नहीं बिठाओगे गलती। अनविता, ये आपको बहुत अच्छा याद रहना चाहिए, ब्रैकेट की कीमत आप दे चुके हो एक बार, दोबारा नहीं देना है, ठीक है। अब आइए, अब इस टर्म को हम कैसे लिखेंगे? वी गोइंग टू राइट 5x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3z, and now the minus will raid this bracket, so minus multiplied by plus is minus 4z minus 2x square and it becomes plus 3xy. Rest we all know is history. So 5x square and 2x square, this is minus term now, so it will be 3x square, 2xy and 3xy gives you 5xy, and 3z and 4z gives you a negative z. Problem done. Yes, Lakshan darling, this one was clear. Subtraction by the straight method. No more tables allowed. Tabular method is gone. Feeding bottle gone. नहीं, feeding bottle नहीं मिला। समझ में आया? क्योंकि मेरे को बड़ा बोर्ड लगता है ये व्हाट यू कॉल दिस एडिशन सब्ट्रैक्शन। मजा आता है जब मल्टीप्लिकेशन, लॉन्ग डिवीजन, ये सब शुरू होता है। आई लव लॉन्ग डिवीजन, आई लव लॉन्ग डिवीजन व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट क्राइंग, आई लव दैट। यकू, yes, all you darlings and darlings, can you just open your textbook and get on to page number, oh, this girl is very smart, she's already opened 83. Okay, 83 में चले आते straight away exercise 6A. 6A, okay, 6A. Lakshan, you have a book with you now. Now how do you do it? I have to give you a, have you ordered the book or not? Otherwise it will be difficult. Already. Already? Already. Okay, very good. So I'm sending you on your WhatsApp. Okay, thanks. नहीं नहीं, हम बताएंगे, इतना जल्दीबाजी मत कीजिए। अच्छा देखो, एक्सरसाइज 6 से दिख रहा है आपको, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? बॉटम अप अप्रोच। लास्ट प्रॉब्लम इज कंसिडर्ड टू बी द हार्डेस्ट, सो वी स्टार्ट विथ 8 एंड वी गैलप 8 6 4 2, दैट्स ऑल। क्विक क्विक क्विक, 8 6 4 2, हाँ 8 6 4 2। ऑल ऑफ यू हैव द बुक विथ यू? ओए अत्रेया, किताब है कि नहीं? हाँ, लेकिन तुम 8642 करोगे। बहादुर वो होता है जो सबसे पहले जाके लड़ता है, कायरो की तरह टू मत करो, है ना? बहादुर नहीं हो क्या आप लोग? बिल्कुल। अच्छा ध्यान देना, हाँ उसमें 3 टर्म है लेकिन 8 वाले पे, हाँ, और बात नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर प्रॉब्लम। लक्ष्य, यू गॉट इट? वी डू 8642 राइट नाउ, गैलप, and at your home you do entire all everything that's pending. किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, the child does not hesitate. The child who hesitates, he or she will fall into the dungeons of Czechoslovakia, and I can't save you. कल अतरे पे पानी फेंकना है मेरे को। मैं फीडिंग पे वाटर बॉटल लेके, अरे फेंकना दो, तुम मेरे घर से पानी भर के ले जाता, पिचकारी चाहिए मैं दे देता हूँ। हाँ ए तू प्रॉब्लम कर, पानी गिरा कैसे? 1 मिनट बात नहीं होता, प्रॉब्लम शुरू। Okay. Hey Vakul, what is happening? You don't get space or what? That entire big table also you are not finding space. Are you so how do you manage in one seat of an aircraft? You put legs on the other passenger or what? इतना बड़ा टेबल में भी उसको जगह नहीं होता है, पंखे में बिठा दूंगा अगले दिन। ठीक है। अच्छा देखो यहां अनन्या ने ना सारे टर्म्स को, दो शी इज डूइंग एडिशन, शी इज पुट इट इन ब्रैकेट, दैट इज आल्सो अ वेरी गुड हाइजीन टेक्निक।
एडिशन भी कर रहा है तो फिर भी उसने ब्रैकेट में रखा है, वेरी गुड। एंड इफ यू थिंक दैट यू आर अनेबल टू हंट द लाइक टर्म्स, तो पहले लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए, मल्होत्रास, खन्नास, सिसोडियाज, और फिर उन्हें ऐड कीजिए। You get no prize for doing the problem early. You get prize for doing it slow, but doing it correct. हो गया? 8 मैच करो, आंसर है ना साथ में इसमें। Did the answer match with 2? Yes, sir. Very good. Go away with the 6 now. 8, 6, 4, 2. Right now we do only this much. And in your homework, it will be entire 6A. Even the subtracts. And in subtracts, you need to be very careful. Addition में कोई मतलब नहीं, पहले डेजर्ट खाओ या मेन कोर्स खाओ। कल सवेरे वॉशरूम में ऑल इज सेम मैच कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं है। सब्ट्रैक्शन में कौन से कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड। ये देखो कितना अच्छा बुक मार्कर रखती है। क्या बच्चा मिला? तो गड़बड़िए हो गया। सही है, आर ठीक है। हाँ, जो ध्यान नहीं देगा उसी का गलत होगा। ए लक्ष्यन, यू आर एबल टू डू और नॉट? कैमरा क्यों बंद कर लिया लक्ष्यन? व्हाट हैपेंड टू योर कैमरा डार्लिंग? Just a cat. व्हाट कैट आया जो आया? एज लॉन्ग एज यू आर वेयरिंग क्लोथ्स प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। कैट है क्या उसके पास? I'm trying to get him on the. No, don't do it. We love cats. Please show him to us. I love pets. Switch on. I want to see him. What's his name? He or she? Yes, it's a he. Wow, Yes. see? So cute. Yes. How young is he or she? It's a he. He's like almost a year old. Almost a year old. Wow. He doesn't want to stay on my lap. If you leave him on the ground, he'll still come up. Yes. वो देखो कितना प्यारा सा टेल, कितना सुंदर है यार। वाओ। मैं कब का लेता, ओनली प्रॉब्लम इज बाहर जाने से कौन देखेगा उनको, वही है। वी लव पेट्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। somebody on the other day asked me in a lift, can I come in? She had a dog with her. I said, I have no problem with them. I have problem with human beings. A dog, if the dog is angry, the dog by face is also like this, see, and angry. But human beings by face, they will say, oh hi Anvita, how are you? But inside there, she is always getting full marks on her, है ना? हाँ, सरकाजम नहीं, इंसान बड़े कमीने होते हैं, मुंह के ऊपर बनाएंगे ऐसे, ओ हाय हैना, लॉन्ग टाइम, आई रियली यू लाइक दैट, और घर जाते हैं, लुक एट दैट गर्ल, एवरी डे शी इज ट्राइंग टू डू सो मच ऑफ स्टूडियस, है ना? दे आर वेरी बैड। पेट्स आर नेवर लाइक दैट। अ डॉग विल गिव हिज लाइफ फॉर यू। और तुम क्या करोगे? बिल्डिंग में आग लगने से पहले बाहर जाके बोलोगे, जयदीप अंकल ना फंसे हुए हैं, उन्हें निकाल लीजिए, है ना? रितिशा तो पक्का बाहर जाते वक्त दरवाजा भी लगा के जाएगी। आई थिंक द डोर इज ओपन, बट प्लीज राशा, ही इज ऑलरेडी इन फायर। और अत्रेय खुश, कल से पढ़ाई नहीं हुआ। ये आदमी क्या यार जिंदगी में। What are कैट डिस्टर्ब मार रहा है उसको। He's telling me a lot.
I was writing. Sir, answer right. राइट आ रहा है, और एक कीजिए 684, एक और करो Sir, 864, 8642. हाँ 8642, जल्दी जल्दी जल्दी। समझ में आया एडिशन? आर यू नाउ कंफर्टेबल विद एडिशंस? Because you are brave children who have done the problems from the last problem. The last is always considered to be the toughest. So you started with the toughest. The rest of them should be a cakewalk for you. Sir was 604. क्या हो गया? गलती हो गया? और कैट की बातें सुन। So math has not. मैं क्या सुना? How many have you done? You're still on 8th one. This girl has done 8th and she is on the next one, long back. Hannah has said she has done. Anvita 8 done. Aryash 8 done. This girl 8 done. I think the 6th is also done. हाँ, इसका 6 भी हो गया. And what are you doing? I will detain you in the tower lobby. Everybody will look. Anna, how comfortable were you with long division? That is the biggest chola bhatura in this chapter. So it's okay, sir. It's okay. ठीक है. We will do a lot of long divisions. Yeah, बोलो. Commas means they are separate terms. Kachori, comma, samosa, comma, sandals, comma, stick, comma. ये बहुत चालाक है, ये समझता है in the whole he is like a crow. He thinks if he closes his eyes the world doesn't see him. And the image he has created at home in front of his mother and father still recognizes him. His mother has not yet understood him. Daddy recognizes him, so daddy gives him dose also. Mama thinks that he is always restless. The child is very disturbing. No, child is C-U-N-N-I-N-G. That mama is not understanding. You know what is C-U-N-N-I-N-G? Yeah. My son is very clever. No, ma'am, he is cunning, like a jackal. लोमड़ी है वो। हाँ, मैथ्स वाले सर का पूरा ट्रबल करते रहेगा। और मम्मा समझती है, मम्मी कैन आई गो टू रत्नदीप एंड गेट वन पैक ऑफ बिस्किट। जैसे इसके जैसा सीधा बच्चा नहीं है, तेरे को तो मैं पहचानता हूँ। Sir, I finished. Yes, then you can log off. We will also log off. Right. So the homework is 6A for you. And the trouble, I'll not say, the chapter actually begins from next episode, where we'll learn multiplication across terms, monomial, bino, trino, and then we get into long division, then some formulas, and then chapter झकास। बहुत दिन हो गए टेस्ट वेस्ट नहीं हो रहा है, जी लो अपनी जिंदगी जब तक स्कूल में टेस्ट हो रहा है। Hey Hannah, what all you all are on a test season now in school? So actually we have 2 exams a week, like throughout the year. So Okay. we have, हाँ, that is to the DPS rule. 50 marks every. हाँ, हो रहा है? हमें फ्राइडे में किसी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कितना मिलता है? 5-6 मिलता है ना? अच्छा खासा मिलता है। हिंदी होता है उसमें? चले तो फिर दुकान बंद करें आज की। Okay. हाँ, होमवर्क पूरा प्रैक्टिस करेंगे तो ही सीखेंगे। So I am closing the recording. Children will close today.